Namaskar. That's right? Yep, you're on the right track. Good. Yep. Hi, everybody. Welcome. I'm super excited to be here. I'm not going to talk a lot because Kunal's going to be doing the talking. Kunal, if you have questions, you can just ask me in English and then we can keep going in Hindi. Super excited to be doing this in Hindi. I want to learn a lot of Hindi. Please teach me some basic Hindi. My name is Bart. I'm lucky enough to be a CNCF ambassador along with Kunal. Congratulations. How do you say congratulations in Hindi? Mubarak ho. Oh, Mubarak ho. That's kind of like Arabic. Yeah. So that's cool. Yeah. Because I know Arabic. So Mubarak ho, Kunal. I'll have to put that on Twitter as well. And I'm also the leader of the Data on Kubernetes community. This is not the first time that Kunal has been on one of our meetups. He will also be in our co-located KubeCon event next week on Monday. Super excited for that talk. We were just talking about that. That being said, Kunal, chakte fate and do your thing. Go for it. Cool. So yeah, welcome everyone. Oh, sorry, I'm supposed to be speaking Hindi. Hindi. Okay. I haven't given like many talks in Hindi, so this is I don't know. I didn't do it. Yeah, okay. Yes. So yeah, welcome everyone. I believe like सब लोग ठीक हो. काफी लोग अभी join भी कर रहे हैं हम लोगों को as a participant. So कोई भी question हो किसी का पूरे session के time पे, you can ask that, मतलब पूछ सकते हो chat के अंदर. And if you're watching, अगर आप recorded version देख रहे हो इसका, then you can ask some. Okay. It's like the reflexes. It's all good. Keep going. This is great. This is cool. It's so hard. Like it's like the reflexes, you know. But anyway. That's okay. That's good. Okay. Yeah, no worries. I can do it. So अगर आप recorded version देख रहे हो, तो अपने questions chat के अंदर आप post कर सकते हो. Also, please Data on Kubernetes community को subscribe भी करो, like करो, share करो. काफी amazing community है ये, जो students के लिए especially, you know, how आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो क्लाउड नेटिव जर्नी के अंदर एंड क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइडेड होते हैं. एंड एक चीज़ होती है कि काफ़ी लोग मतलब शुरू में उनको डर लगता है कि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है ना, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा. एंड CNCF का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर अकेले में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. इट्स लाइक मतलब तुम्हारा मॉनिटरिंग में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हारे कंटेनर्स एंड Kubernetes एंड लाइक डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग and orchestration and all these things. So इतने सारे मतलब तुम्हारे यहाँ पे domains आ जाते हैं. So लोग भी बच्चे confuse हो जाते हैं कि हम मतलब किस में कैसे contribute करें. And सिर्फ मतलब students के लिए ही नहीं, ये काफ़ी welcoming community है, किसी के लिए भी, कोई भी अगर इसमें contribute करना चाहता है ना, तो वो कर सकते हैं. And community के बारे में हम थोड़ा सा इस session के अंदर बात करेंगे. आपके questions में आंसर करूँगा. मैंने देखा काफ़ी सारे लोग already जुड़ चुके हैं, so उसके बारे में हम बात करेंगे. कम्युनिटी के अंदर स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे. कंट्रीब्यूट कैसे करना है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे. एंड किन लोगों से मतलब रीच आउट कर सकते हो, बेसिकली एंगेज कैसे होना है कम्युनिटी के अंदर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. अदर देन दैट हम ऑल्सो बात करेंगे Kubernetes क्या होता है ना, एंड Kubernetes का मतलब रोल क्या होता है, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस एप्लीकेशंस, बेसिकली ऑल थिंग्स लाइक डेटा ऑन Kubernetes के रिलेटेड. सो या all right, Bart, is it like a Q&A session or am I the only one speaking? No. I mean, Q&A as much as you want. I mean, I can, we can just kind of reflect on the things that we talked about. And so I can ask you questions in English, then you explain stuff in Hindi? I can then, you can ask me a question in English. I can translate that in Hindi and Perfect. Then answer the question. Okay, so just real quickly then, Kunal, what is Kubernetes? Sure, तो Kubernetes क्या होता है, जैसे तुम्हारा अगर तुम जैसे बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हो ना, तो एकदम पुराने टाइम की बात करते हैं. जैसे हमारा पहले तुम देखा होगा वर्चुअल मशीन्स वगैरह होते हैं, सर्वर्स वगैरह होते थे. तुमने सुना होगा गूगल, एप्पल टाइप कंपनीज गराज से शुरू हुई हैं वगैरह करके. सो जो तुम्हारा वर्चुअल मशीन होता है ना, बेसिकली एक तरह से तुम्हारा जो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर मतलब फिर तुम्हारे वो डिवाइड कर देता है स्पेस को हार्ड डिस्क की, और हर स्पेस के अंदर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देता है. तुमने नाम सुना होगा डुअल बूट करने का, है ना. इसमें क्या होता है कि एक तो एक काफ़ी ज़्यादा स्लो काम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं. सो एक नई चीज़ आई जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, उसको हम कहते हैं कंटेनर्स. कंटेनर बेसिकली क्या होता है, एक आइसोलेटेड मतलब अकेली एनवायरनमेंट के अंदर एक एप्लीकेशन रन करनी होती है. अगर तुम कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तुम बोलते हो कि मेरे को एप्लीकेशन अपने दोस्तों को भेजनी है ना, तुम्हारा दोस्त बोलता है कि यार मेरे कंप्यूटर पे तो नहीं चल रही, और द फेमस इट्स नॉट वर्किंग ऑन माई कंप्यूटर. तो उसके अंदर क्या होता है, फिर तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक कि तुम मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक काफ़ी सारी चीज़ें शिप करनी है ना, बाइसिकल शिप करनी है, खाना शिप करना है ना, रॉ मटेरियल्स, कार है ना, कुछ है ऐसे मतलब ग्रेन्स बहुत सारी चीज़ें हो गई. तो उन लोगों के दिमाग में आ जाता है कि यार हम इसको
किस तरह से शिप कर पाएं, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग वो है ना, रिक्वायरमेंट कि मैं कैसे डॉक तक ले जाऊंगा, कैसे दूसरी कंट्री तक ले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो एक आइडिया आता है शिप में, तुमने कंटेनर्स देखे होंगे, बड़ी सी शिप होती है, उसमें बड़ा सा डब्बा होता है, मतलब डब्बे होते हैं काफ़ी सारे, है ना, उसको एक कंटेनर कहते हैं हम। तो आइडिया क्या होता है, जो भी चीज़ तुम्हें भेजनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, उसके अंदर तुम डाल दो अपना सारा सामान, एंड वो डब्बा जो है ना उसको शिप कर दो। दैट इज बेसिकली लाइक द आइडिया ऑफ कंटेनर्स ओवर हियर। तो तुम उस बक्से के अंदर क्या कर सकते हो, जो एप्लीकेशन का कोड है वो डाल सकते हो, उस कोड को रन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो डाल सकते हो, क्या एनवायरमेंट चाहिए, क्या डिपेंडेंसीज चाहिए वगैरह वगैरह। देन उस बॉक्स को आप रन करते हो यूजुअली वर्चुअल मशीन्स वगैरह पे। तो इन बॉक्सेस के अंदर ही एप्लीकेशन रन हो रही होती है तुम्हारी। तुम अगर गूगल करोगे, लाइक मतलब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, टिंडर वगैरह हैं जैसे, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ उनके मतलब ऐसे कंटेनर्स पॉड्स के अंदर रोज चल रहे हैं। सो ये बेसिकली आइडिया होता है कि तुम्हारा जो एक्चुअल में प्रोडक्शन में जैसे कोड चल रहा है ना, तुम जैसे फोन वगैरह में यूट्यूब वगैरह यूज करते हो, तो यूट्यूब की एप्लीकेशन भी कहाँ से चल रही है। अब जब तुम गूगल की आईपी पिंग करते हो, है ना, या किसी और चीज का आईपी एड्रेस निकालते हो, तो क्या तुम्हें हर बार वो सही सेम मिलता है? नहीं ना। अगर तुमने गूगल क्लाउड वगैरह मतलब क्लाउड वगैरह के बारे में पढ़ा हो, क्लाउड वगैरह के अंदर भी मतलब तुमने देखो डेटा सेंटर्स होते हैं वर्ल्ड के अराउंड पे। तो ऐसी ही एप्लीकेशन भी काम करती है, तुम्हारे नियरेस्ट जो है या जो अच्छा बैंडविड्थ पे है वहां से तुमको डेटा आके जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो मिलने लग जाता है। सो सारी एप्लीकेशंस जो है मतलब कंटेनर्स में चलती हैं। वो कंटेनर्स वर्चुअल पॉड्स के अंदर होते हैं और वो पॉड्स वर्चुअल मशीन के ऊपर चलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्यूबरनेटिस का क्या काम होता है फिर, है ना। तो तुम मानो कि जैसे अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, कॉलेज की वेबसाइट होती है ना, तो 10वीं का जब रिजल्ट आता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, है ना। सो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आता है, एंड बट आई फील लाइक यू आर मिसिंग आउट। No, 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 no. This is beautiful. This is like listening to music. This is amazing. Okay, no worries. There should be like a live closed caption or something. No, no, no. It's okay. Anyway, Keep going. This is great. Okay, no worries. Oh, we got a So question. just We got a question. We got a question from Punit. Thank you, Punit, for the question. Keep the questions coming in. What is a virtual machine? Sure. So virtual machines are basically like virtual machines में क्या होता है कि जैसे तुमने सुना होगा ना कि तुम जैसे डुअल बूट कर रहे हो, है ना, लिनक्स के अंदर डुअल बूट कर रहे हो या मतलब विंडोज में डुअल बूट वगैरह जो भी कर रहे हो। सो वर्चुअल मशीन का मेन डिफरेंस कंटेनर से क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रॉपर स्पेस तुम्हारी एलोकेटेड होती है ना। तो इसके अंदर एक अलग से तुम्हारी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस होगी जिसके अंदर खुद का मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह डाल के रखेगा, एंड उसके अंदर सारा मतलब एक तरह से तुम मान सकते हो एक अलग से तुम्हारा सेपरेट कंप्यूटर बन चुका है। लेकिन एक्चुअल में तो वो हार्ड डिस्क पार्टीशन नहीं हो ना, मतलब फिजिकली किसी ने काटा नहीं ना। सो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एक वर्चुअल मशीन होती है। जो कंटेनर्स होते हैं ऑन द अदर हैंड वर्चुअल मशीन के कंपैरिजन में देखूं अगर मैं, द थिंग यू आर लुकिंग फॉर इज वर्चुअलाइजेशन वर्सेस कंटेनराइजेशन। कंटेनर क्या होते हैं कि वो बोलेगा कि ठीक है मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा से इंस्टॉल नहीं करूंगा, हार्ड डिस्क की स्पेस जो है डिवाइड नहीं करूंगा, वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसी के ऊपर एप्लीकेशन रन करता है। सो ये थोड़ा मेन डिफरेंस हो जाता है। अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाता है कंटेनर्स वगैरह रन करना, है ना, और न्यूली जल्दी से ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग वगैरह वगैरह। तो कुबरनेटिस की मैं बात कर रहा था, इन्हीं कंटेनर्स की बात करते हैं। तो तुम्हारी जैसे 10वीं के रिजल्ट आता है ना, वेबसाइट रुक जाती है, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक बारी में वेबसाइट के ऊपर जा रहे होते हैं, है ना। दैट इज़ द रीज़न कि वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। आईपी के अंदर मतलब मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही होता है ना। अभी जब कोरोना की वैक्सीन की वेबसाइट थी उसमें भी मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसमें यही हो रहा था कि मतलब ज़्यादा लोग अगर रिक्वेस्ट मारने लग जाते एक टाइम पे तो वो लोड सह नहीं पाता। तो तुम्हें एक और एग्जांपल हो सकता है कि तुम्हारा अगर जैसे मतलब तुमने एक वेबसाइट बनाई, 100 लोग यूज़ कर रहे हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद 1 लाख लोग यूज़ करने लग गए, तो तुम चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो जो लोड सर्वर की जो रिक्वेस्ट आ रही है, अभी वो सपोज एक सर्वर पे आ रही है, तुम चाहते हो अगर यार अगर 1 लाख लोग रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाए, है ना, तुम्हारी एप्लीकेशंस रेप्लिकेट हो जाए मतलब और वर्चुअल मशीन्स पे चल जाए ताकि इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, ये क्यूबरनेटिस अगर हमें ये सारे काम करने हैं मैन्युअली तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मैन्युअली का मतलब अगर कोई तुम्हारे कुछ नंबर ऑफ पॉड्स या कंटेनर्स जो चल रहे थे रुक गए मान लो, तुम्हें रीस्टार्ट करने हैं, मैन्युअली करना है ना, मैन्युअली करना पड़ेगा, उसमें भी मतलब टाइम जाएगा तुम्हारा। तुम्हें स्केल करना है ना, तुम्हें स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन करना है, स्टोरेज मैनेजमेंट करनी है ना, तुम्हें स्केलिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है ना, तुम्हें मतलब काफ़ी सारे वर्कलोड चलाने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो जितनी भी एप्लीकेशन एक साथ चल रही हैं
तो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उनको माइक्रो सर्विसेज वगैरह हम कह सकते हैं। काफ़ी सारी सर्विसेज मतलब अलग अलग चल रही हैं, वो एक दूसरे से कैसे बात करती हैं। तो इसको अगर हमें ऑटोमेट करना है तो उसके अंदर क्यूबरनेटिस हमारी हेल्प करता है। क्यूबरनेटिस एक तो ये सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रेशन इंजन नहीं है, ऑल्दो मतलब इट्स वन ऑफ द, उसकी एक फंक्शनैलिटी है, बट वेबसाइट के ऊपर भी ये लिखा हुआ है कि लाइक इट्स मच मोर देन ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। तो इसके अंदर क्या होता है कि लाइक तुम्हें, जैसे मैंने बात बताया कि ऑटोमेटिक जो रोल आउट्स होते हैं और रोल बैक्स होते हैं वो तुम्हारे अपडेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है रोल आउट और रोल बैक्स का, कि अगर तुमने कोई एप्लीकेशन बनाई है ना, तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह को अपडेट आता है तो कुछ लोगों को आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा बाद में आता है, धीरे धीरे करके सारी ऐप्स मतलब ऐसे अपडेट होती रहती है। कुछ वेबसाइट्स में भी ऐसा कभी कभी होता है। सो ये ऑटोमेटिक रोल आउट रोल बैक का मतलब ये होता है कि तुम मतलब जैसे नया वर्जन निकालना है ना, अगर तुम्हें अपनी एप्लीकेशन का करंट, एक दो तरीके से कर सकते हो। एक तो सारा काम रोक दो अभी के लिए, जो लोग तुम्हारी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं बोल दो कि यार आधे घंटे के लिए बंद रहेगी, हम थोड़ा अपडेट मार रहे हैं। एक तो ये काम हो जाता है, काफी लोग करते हैं ये। दूसरा हो जाता है ऑटोमेटिक रोल आउट एंड रोल बैक्स, मतलब जैसे जैसे लोग यूज कर रहे हैं धीरे धीरे वो नया नया वर्जन निकालते हैं और पुराना वर्जन पीछे जाता रहता है। तो इसको ये क्यूबरनेटिस हमारी इसमें मदद कर देता है। वो क्या करता है, पुराने पॉड्स निकालता है, न्यू पॉड्स डालता है, न्यू कोड्स मतलब अपडेट करता रहता है उनको, है ना। स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन, जो ये पॉड्स होते हैं ना जिनके अंदर एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं, इसकी स्टोरेज जो होती है ना वो परमानेंट नहीं होती। मतलब अगर मैंने बोला ना बॉक्स होता है उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन रन कर रही है, अगर वो बॉक्स खराब हो गया तो उसके अंदर जो चीज स्टोर थी वो भी खराब हो जाएगी। इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज, है ना। नहीं, परसिस्टेंट स्टोरेज ये नहीं होती, इसको नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज कहते हैं। परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब होता है कि डेटा रहेगा। तो स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह के काम में भी हमें क्यूबरनेटिस हेल्प कर देता है। अगर तुम्हें Real quick here, परसिस्टेंट sorry. स्टोरेज चाहिए, While मतलब you're डेटा talking रहना about चाहिए, तो what उसके लिए तुम yep you're I don't know if it's just yep me, go but ahead. I feel like your microphone is crackling a little bit. Okay, just give me a second. Okay. Just give me 1 second. Anyway, so far very, very good. Chakte fate. Amazing. Yeah, I know what's going on. Just It's give me all a good, second. man. It's all good. No, I didn't want to stop you because you're getting to a really good part It's about persistent no, storage. it's yeah, it's like my PC is heating up, so just 2 minutes. It'll be That's back to okay. That's normal. Let me okay. That's close all okay. the other In the meantime, applications that are not I'm gonna required. leave everybody a link of a video that Questions, yeah. yeah, and keep the questions coming. But in the meantime, we can I will share our promo video for our event next week in which Kunal will be a speaker. Here we go. All right, thank you, Arun. Yeah, you agreed. In the meantime, while Kunal's taking a break, feel free to take a look at the links that we've shared for our YouTube channel, also our webpage. We got this here. All right. Kunal's been an amazing participant in our community for the last few months. He's participated in more than a couple of meetups. And we're really, really excited about getting more young folks involved. Just a quick question, all right, just to check and see how old everybody is. All right, so I'm 35. How old is everybody here? How old is everybody? Is anybody older than 35? I doubt it. 19. That's good. I remember when I was 19. That's good. Thank you for sharing, Arun. Yeah, 22. Cool. What I'm saying here is that our community is very much focused on being as inclusive and diverse as possible, which is why we're doing this in Hindi. I think it's super cool to do things in different languages. I'm sure many of you speak many, many more languages than I do. I speak English, Spanish, and Arabic because I lived in Egypt many years ago. But what I want to say about that is that our community, we want to get young people, right? We want to be speaking your language in every sense, all right? In the technical sense, so you don't feel like, oh gosh, this is too complicated, like I can't do it. We want it to be accessible. We want to be inclusive. We want to have as many people in there as possible. So that's why also the event that we're doing on Monday that Kunal is participating in it's 100% free. All right. All you'll have to do is go to our YouTube channel on Monday and you'll be able to check out everything. We'll also be giving away prizes, swag, t-shirts, things like that, like the t-shirt that I'm wearing right here. So we have all that stuff. But like I said, we really, really, really want to be as inclusive as possible, which is why the talk that Kunal is going to be giving in our co-located event next week for KubeCon will be about how to scale communities so that young people can be more involved, right? With things like internships or mentorships, things like that. That's something we very much want to have in our community as well too. So I invite you all. Oh, very good. Everyone's all connected. That's good. So you will all be invited to participate in lots and lots of different ways. Really quickly as well, where is everybody located? All right. This is where I am. Where's everybody else? Just curious.
we can see where, geographically speaking, where people are located. Because generally we have quite an international audience. Well, yeah, but India is a big place. All right, so Bengaluru. All right, yeah, very good. Delhi. Okay, cool. Good. All right, so we've got some different places. That's nice. Yeah. So anyway, so yeah, here I am in Spain, but originally from. Okay, good. It's also in India. Thank you, Oshi, for commenting. I'm in Spain, but I'm originally from the United States, from Northern California, near San Francisco. Wow, we got a lot of different places in India. That's exciting. In the meantime, maybe you can help me learn some Hindi. So how can we say, let's see, what are some really important words to learn in Hindi? Because I've learned sakte so far, which I understand is like the coolest thing you can possibly know. Could you maybe teach me how to say something like, what's like, like in English you have the same, you can say hello, but then you can say what's up. What would be like the equivalent? What would be the equivalent of I'm gonna ask this, all right? How do you say what's up? All right. But namaste is like hello, right? So then how do you say like what's up? Like how are you doing? But like more colloquially, like informally, between friends. Like if you see a friend in the street, maybe you say namaste and things like that, but what do you say? Oh man. All right. So aate, I might have to get kaya chai raha. Really? Kaya chai raha hai. Am I saying that even like halfway correct? Kaya chai raha hai, or kaise ho. Man, this is amazing. It's so much cooler in English. It's a way more musical, fun language with nice texture. Yeah, I'm back. Oh, Kunal, so you had to listen to my Hindi. You had to listen to my Hindi. Here to save the day. All right, so yeah. Sorry. So I'm trying to learn how to say what's up, and they're trying to help me. So to say what's up, kaya chai raha hai. That's probably not even close to correct. How do you say that? How do you say what's up? क्या चल रहा है? Oh man, you put everything together. Yeah. All right, so it's like all one word. Anyway, I'm sorry I interrupted you. You were talking about persistent storage. No worries. You continue with your talk, Kunal. Go right ahead. Cool. All right. Well, thanks a lot for joining and शुरू करते हैं. हम बात कर रहे थे persistent storage की. So persistent storage का क्या था कि जैसे मैं बोल रहा था कि जो कंटेनर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन होती है, तो अगर वो कंटेनर डाई कर जाता है ना, तो वो डेटा तुम्हारे पास रहता नहीं है. फिर इसको हम नॉट persistent storage कहते हैं. तो अगर तुम्हें चाहिए कि अच्छा तुम्हारा जो डेटा, ये हम जो बात कर रहे हैं स्टेटफुल एप्लीकेशंस और स्टेटलेस एप्लीकेशंस की, है ना, तो बेसिकली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब बात हम क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे उस बारे में. एंड तुम लोग भी इफ समवन इज आप लोग अगर ज्वाइन कर रहे हो तो यू कैन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो चैट के अंदर, लाइव चैट के अंदर. एंड या लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसरिंग तुम सबके क्वेश्चंस. बट Bart, this was like about the question you asked, what is Kubernetes? So so we'll talk more about like stateless versus stateful afterwards. We can think about that. And also, maybe just thinking about, let's think about it this way. We can kind of think about it because, you're very, very active in the CNCF. You're also going to be on the release team. Congratulations on that too. That's super exciting. But think about it this way, is like Kubernetes sounds like it's really sophisticated, but there are many opportunities for young people, such as yourself, such as all the wonderful people that are attending today, to be able to get involved too. Can you just explain like some of because seriously, everyone needs to understand it doesn't matter how old you are, what languages you speak or don't speak, your technical level, you can actively start participating and contributing to Kubernetes. All right. So Kunal, can you explain just some of the ways you can do that? Oh, you're muted. Yes. Yeah, sorry, not one. Yeah, I'm just sending one text on the public channel so that others can also join this call. Okay, cool. All right. So हम बात करें. That's a good question, Bart. And let me just translate the question for everyone. So Bart ने पूछा कि जो Kubernetes है वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो काफी लोग ओवरवेलम फील करने लग जाते हैं कि यार हम इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर पाएंगे. So the idea is कि you don't even have to तुमको जरूरत भी नहीं होती कोडिंग वगैरह आने की. ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इन कम्युनिटीज के अंदर होते हैं और ये काफी ज्यादा जरूरी भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं. But if I'm talking about you, right? So we're talking about like non-code contributions, how important they are. So I believe Bart is also like, he does so many amazing things that are not related to directly on the hands-on coding part. Is that correct? Sure. Absolutely correct. Yeah. How do you say correct? How do you say correct in Hindi? Sahi. Sahi. Oh, that's great. It's also kind of like Arabic because in Arabic, sahi. Yeah, it's cool. Good. Sahi. Yeah, good. Cool. ठीक है.
तो हम बात कर रहे थे लाइक कंट्रीब्यूट कैसे करना है, हाउ टू कंट्रीब्यूट। तो तुमको सबसे पहले क्या करना होता है क्यूबरनेटिस के अंदर, ये चीज रियलाइज करनी पड़ती है कि एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट, हर लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एवरी कंट्रीब्यूशन काउंट्स, मतलब हर कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है। अब अगर मैं तुमको एक तरह से बात करूँ, अगर तुम जैसे सीधा डायरेक्टली गिटहब रिपोजिटरी पे चले जाओगे, वहां पे जाके देखोगे कितने सारे फोल्डर्स वगैरह हैं, सो ऑब्वियसली शुरू में वो थोड़ा ओवरवेलमिंग फील होगा, बट द आइडिया ओवर हियर इज कि क्यूबरनेटिस के अंदर एक चीज होती है सिक करके, विच इज कॉल्ड अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, काफी सारे जो डोमेन्स होते हैं ना क्यूबरनेटिस के, हमारा एपीआई हो गया, टेस्टिंग हो गया, है ना, वगैरह वगैरह जितने भी सारे हैं, एंड ये तो चलो कोडिंग रिलेटेड वाली चीज़ें हो गई, बट नॉन कोडिंग रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कंट्रीब्यूटर एक्सपीरियंस, जो लोग मतलब जो टीम होती है जो ये मेंटेन करके रखती है कि जो लोग हमारा मतलब जो लोग हमारा प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो लोग क्यूबरनेटिस को यूज़ कर रहे हैं, उनको हम और सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और तुम्हारी मतलब मार्केटिंग वाली भी एक टीम होती है जो मतलब ब्लॉग्स वगैरह के बारे में काम करती है। अभी क्यूबकॉन इवेंट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो उसके बारे में सारी चीज़ें मतलब वो लोग हम टीम्स में देखते हैं, है ना। अदर देन दैट उसके अंदर एक और चीज़ होती है, तुम्हारी एक डॉक्स वाली टीम होती है, सिक डॉक्स। तो उसके अंदर तुम्हें अगर डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रीब्यूट करना है ना, तुम्हें अगर कोडिंग इतनी नेक्स्ट लेवल टाइप चलो मतलब नहीं आती, मान लो मतलब गोलैंग वगैरह जैसे यूज होता है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वगैरह वगैरह करके, तुम्हें उसमें इतना आइडिया नहीं है, बट तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंट्रीब्यूशन इतने मैटर नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू गेट इन्वॉल्व मतलब कम्युनिटी के अंदर। सो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं एक तो मतलब इतना ज़्यादा जो बिगिनर्स लोगों के लिए है ना, उनके लिए बिगिनर फ्रेंडली भी होते हैं, बिकॉज तुम क्या कर सकते हो, ये जो मैंने 6 बताए ना आपको, तो इसके अगर आप जस्ट github.com पे जाओ, क्यूबरनेटिस के अंदर कम्युनिटी वाली एक रेपो है, उसके अंदर 6 हैं, वहां पे जाके देखोगे ना तुम्हारी सारी डिटेल मिल जाएंगी हर सिक के बारे में कि इस सिक की मीटिंग कब हो रही है। तो रेगुलर वीकली या बाई वीकली करके या मंथली करके जो मीटिंग्स रखती है हर सिक, उसके अंदर जो न्यू कमर्स होते हैं ना, वो लोग डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी शुरू किया था, सो मैंने भी लाइक ऐसे मार्केटिंग वाले 6 के अंदर वगैरह वगैरह के अंदर बस लाइक कि मैं से यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वगैरह, एंड मैं CNCF इंटर्न था, मेरे को क्यूबरनेटिस में GSOC में प्रोजेक्ट था, मेरे को काफी पैशनेट अबाउट कम्युनिटी के, आई वांट जस्ट हेल्प आउट। तो बोलेंगे या कूल, यू कैन हेल्प आउट, तुम हेल्प आउट कर सकते हो, तुमको टास्क वगैरह देंगे, कोई डाउट है तो उनसे पूछ सकते हो वगैरह वगैरह। सो ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि यार मतलब बिगिनर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इवन लाइक तुमको कोडिंग भी नहीं आनी। डेफिनेटली अगर कोडिंग वाले पार्ट में पार्ट लेना है तो उसके लिए मैं एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ, लिनक्स फाउंडेशन मेंटरशिप करके एक प्रोग्राम होता है ना। सो उसके अंदर इफ़ यू अप्लाई तो उसमें स्टिपेंड भी मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, काफ़ी सारे लिनक्स फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगेन आई सी लाइक 40 पीपल हैव जॉइंड, सो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो चैट के अंदर, मैं आंसर करने को मतलब आई भी खुश होऊंगा। Cool. Alrighty. So that was about like getting involved in community. One thing I would recommend, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा तुम लोगों को, कि जब तुम इन कम्युनिटीज़ के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हो ना, यूट्यूब पे जाओ, एक चीज़ होती है क्यूबरनेटिस कंट्रीब्यूटर समिट, तो उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना वो यूट्यूब के ऊपर पड़े हैं, उसके ऊपर उन्होंने डिटेल में बता रखा है सिक को नेविगेट कैसे करना है, कोड स्ट्रक्चर मतलब रेपो स्ट्रक्चर कैसे देखना है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में पड़ी हुई हैं, बस गूगल करो क्यूबरनेटिस कंट्रीब्यूटर समिट, एंड उसके ऊपर तुमको भी मिल जाएगा। बाकी बार्ट ने लिंक शेयर कर रखे हैं, एंड या मोस्ट डेफिनेटली देखो आइडिया इतना होता है कि इन्वॉल्व होना होता है कम्युनिटी के अंदर। एक बार तुम मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करना शुरू करोगे ना, तुमको खुद ही टास्क पता चल जाएगा, वो लोग भी बोलते हैं कि हे ये टास्क चल रहा है, कोई लेना चाहेगा, एंड हम हेल्प करने के लिए रेडी हैं। जैसे अभी मैंने एक ब्लॉग निकाला सिक यूजिबिलिटी पे, सो जेसन वाज देयर टू हेल्प मी, ही वाज लाइक, उन्होंने बोला कि ठीक है ये गेव मी फीडबैक वगैरह वगैरह करके, मेरी PR उसमें थोड़ी ओपन है, हम ऐसे ब्लॉग में भी तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अदर देन दैट एक और पर्सनल थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस जो होता है, there's this thing called Kubernetes release shadows, for which I got selected recently for the 1.22. So release shadows क्या होते हैं कि काफी सारे ना टीम्स होते हैं रिलीजेस के अंदर, है ना, सो उसके अंदर आप पार्ट ले सकते हो, एंड लाइक कम्युनिकेशंस के अंदर हूँ मैं फॉर एग्जांपल अभी। सो हमारा रोल होता है लाइक डॉक्स वाली जो है मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाली जो सिग है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है, एंड रिलीज करते टाइम क्यूबरनेटिस का जो नया वर्जन आएगा मतलब अभी 1.22 आएगा, तो उसके अंदर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन तो होगी, तो उसके अंदर हम लोग हेल्प आउट करेंगे। तो शैडोज का काम क्या होता है, रिलीज टीम के जो लीड होते हैं ना, वो शैडोज को ट्रेन करते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें मतलब कंट्रीब्यूट करना है तो हम आपको हेल्प करेंगे सीखने में कि पूरा प्रोसेस क्या होता है रिलीज का। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं भी जूनियर ईयर में ही हूँ, रियली एक्साइटेड मतलब 1.22 के लिए, बट या Bart, that answered the question. That's great. No, I think that's fantastic. I liked it.
what I want to think about this is, what do you think are the things that are particularly challenging for young people when thinking about Kubernetes? Getting started and engaging. Question क्या था बार्ट का? Maybe repeat the question. Yeah. बार्ट का क्वेश्चन था कि जब लोग क्यूबरनेटिस के बारे में पहले से शुरू करते हैं तो उनको चैलेंज क्या लगता है, मतलब क्या मुश्किलें फेस होती हैं जब वो शुरुआत कर रहे होते हैं क्यूबरनेटिस की? Oh, the word for problem is mushkile. Yeah. That's also from Arabic too. Good. Sorry. Yeah. You're already there. So yeah, that's good. Okay, क्या प्रॉब्लम फेस होती है? तो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में टच किया अभी ऑलरेडी, बट इन डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी. मैंने क्यूबरनेटिस का नाम सुना था फ्रेशमैन ईयर में, जब मैं रेड हैट के क्लाइंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था. तो मेरा आइडिया था कि मैं जावा प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करूंगा. मेरे को क्यूबरनेटिस वगैरह बारे में ज़्यादा पता नहीं था. सो जो कम्युनिटी मेंबर थे उन्होंने बोला कि अच्छा क्यूबरनेटिस ये होता वगैरह वगैरह, डॉकर वगैरह सीखो, अपनी खुद की एप्लीकेशंस डॉकराइज करो, क्यूबरनेटिस वगैरह सीखो. तो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट अगर मैं डायरेक्टली क्यूबरनेटिस रेपो की बात करूँ या ऑर्गेनाइजेशन सीएनसीएफ के अंदर की बात करूँ, वो होता है गेटिंग स्टार्टेड. क्योंकि रिसोर्सेज देखो काफ़ी सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम बच्चों को आती है रिसोर्सेज यूटिलाइज करने में. एंड अगर तुम बात कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा मैं, काफ़ी बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये दे रखा होता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, बट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये नहीं दे रखा होता कि लाइन बाय लाइन कैसे कंट्रीब्यूट करना है, हर फाइल का मतलब क्या है, ये फोल्डर क्या है, वो फोल्डर क्या है. थोड़ा बहुत दे रखा होगा, बट ऐसे कॉन्क्रीट प्लान नहीं होता कोई कि मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के. नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास. सो करेंगे ऐसे फिर, है ना, कंट्रीब्यूट कैसे करें, प्रोजेक्ट को समझे कैसे. तो पहला आइडिया ये है कि पूरे के पूरे जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तुमने क्यूबरनेटिस में भी देखा होगा, बड़े और प्रोजेक्ट्स में भी देखा होगा, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड होता है. क्यूबरनेटिस के अंदर जैसे सिग्स में भी डिवाइडेड है ना. तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की मतलब कलेक्टिव नॉलेज आने की नीड नहीं है, वो काफी सुपर ह्यूमन चीज हो जाती है, पूरा का पूरा में रटा हुआ है. ऐसा नहीं करना, है ना. एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, वर्क फ्लो कैसे चल रहा है, वो हेल्प आउट तुमको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए. We got one question here. Ankit was asking, what's the name of the GitHub repo where freshers can contribute? He missed that. Sure. Kubernetes community नाम से है, मैं लिंक भेजता हूँ एक मिनट चैट के अंदर. Bart, can you just send the Kubernetes community repo? Yep. Kubernetes website is also a good place to start. You can share that as well. Let me just share Kubernetes website. So जो लोग मतलब ये काफ़ी अच्छी जगह है, ब्लॉग्स वगैरह में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें, वेबसाइट के लिए भी है, तो या मोस्ट डेफिनेटली. एंड मैं तुम्हें Kubernetes की को कम्युनिटी वाली भी भेज देता हूँ, एक सेकेंड. ये देखो, इसके अंदर सारे सिग्स मेंशन्ड है. वेयर इज इट? सो ऑल द सिग्स आर लिस्टेड ओवर हियर. एंड हर सिग की मीटिंग कब होती है, क्या होता है, कैसे होता है, किन लोगों को रीच आउट करना है, किस स्लैक चैनल पे जाना है, वगैरह वगैरह सब कुछ एक जगह पे मेंशन्ड है. एवरीथिंग इज मेंशन्ड एट वन प्लेस इन द कम्युनिटी रेपो. देयर वाज वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू. एक और चीज थी जो कि थी मेंटरिंग रेपो, विच इज रिलेटेड टू जो तुम्हारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स होते हैं ना, लाइक गूगल समर ऑफ कोड, सीजन ऑफ डॉक्स, आउटरीच, लिनक्स फाउंडेशन मेंटरशिप्स. दिस इज द वन, सो check it out as well. This is also great. Yep. And Bart has also shared. Bart ने भी अभी शेयर किया है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में, उनका रोल क्या होता है वगैरह वगैरह, है ना. But basically, once again, with the special interest groups, you only have to attend 1 hour per week, and you don't even have to do anything. You can just go and listen, and be there, and be happy, and be welcoming, and energetic. That's all you have to do. Yeah. Wow, 50 people. That's great. Yeah. Nice. Okay. अपने questions पूछ सकते हो. I'll be happy to answer. Good. All right. Yeah, I believe that answers the question, Bart, and we shared a lot of resources as well. Yeah, we did. Do you want to? So sorry, Ayush raised. Somebody raised their hand. Yes, Ayush. How can we help you? Ayush. Hello. Hey, Ayush. What's up? Actually, I joined the webinar a bit late. Can you just give me a short context of what you have been talking about? We can, and also don't worry, Ayush, because we will upload this to YouTube probably today. All right. So if you missed anything, but Kunal, if you just want to give them a summary of the major points that we talked about, and then we can jump into stateful versus stateless.
we already talked a bit about, so you haven't missed much because we'll be talking about that in detail. हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर रहे होंगे, stateful versus stateless applications वगैरह के बारे में. And अभी ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है. इंट्रो था and CNCF के बारे में थोड़ा अपनी experiences वगैरह. बट कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, और YouTube पे अपलोड, जैसे बार्ट ने बोला, अपलोड हो जाएगा. Okay, cool, good. Continuing with that is like I said, is that maybe we can, one of the things about, here we got a question. Yep, we got a very nice comment from Joel. Thank you very much. Joel, yep. Very, very good stuff. Absolutely true. The thing is, the Kubernetes space is a very, very big world, and that's why it can feel a little bit overwhelming, because you look at tools and you look at this and you look at that, and we can think about a lot of stuff. We can think about cost control. We can think about security. We can think about infrastructure. We can think about development environments. We can think about developer experience. There are lots of different elements, but don't worry. All right. With all the advice that Kunal is giving you, is just go out there and ask questions. If you don't know something, someone in the CNCF Slack and the Kubernetes Slack will be happy to answer. Right. Yeah. And let's also, go ahead, Bart. Sorry, no, you go ahead. No, I was just saying that KubeCon is free for students. मतलब KubeCon free है इस बार students के लिए. So if anyone wants to attend, you can reach out to me. I can provide you a coupon code and make sure you attend Data on Kubernetes co-located event as well. उसको भी attend करना. It's very, very good. And I'm going to be speaking there. There's काफी सारे amazing speakers होंगे वहाँ पे. And मैं एक video बनाने वाला हूँ especially for KubeCon, student guide for KubeCon basically. So that video will be out soon, today or tomorrow maybe. That's really, really good. We got another question from Akshit saying, can you show a use case about how to contribute being a beginner? As you said, for beginners, as a non-coder can get started to begin. All right, that's perfect. Super good question. All right. One of the easiest ways, and Kunal probably already mentioned this, would be documentation. All right. And also as well, like what we're doing right now, doing stuff in different languages is also contributing. If you speak English and you can translate to Hindi or other languages, that's contributing too. Getting other folks involved, that's also contributing. Just attending the meetings, retweeting and liking and social media and things like that, that's also contributing, because it's putting the word out there about cloud native technologies, a welcoming community, and giving people opportunities. All right, Kunal, translate that. Yeah, so Bart ने बोला कि like documentation काफी great way है start करने का. तो तुम्हें जो, अगर तुम non code contributions की बात कर रहे हो, है ना, so ऊपर जो link भेजे ना हमने community वाला, उसके अंदर SIG docs करके एक folder होगा, उसको जाके खोल के देखो, उसके अंदर काफी information given है. Other than that तुम क्या कर सकते हो, जो मैंने mentoring वाला folder भेजा है, उसके अंदर student programs हैं काफी सारे, उसमें apply कर सकते हो. There's one more new thing that is yet to be announced होने वाली है, something special for students. KubeCon के बाद, after KubeCon we'll announce that, so stay tuned and follow that. But other than that, one more thing I wanted to share, एक और चीज शेयर करनी थी मेरे को कि रिलीज, तो शैडोज के बारे में मैंने बताया, तो उसके अंदर डॉक्स वगैरह के अंदर है ना, तुम शैडो कर सकते हो. वो लोग आपको फिर ट्रेन वगैरह टाइप करते हैं कि अच्छा ऐसे रिलीज वगैरह होती है वगैरह वगैरह. सो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा. जैसे मेरा भी 1-2 बार रिजेक्ट हुआ था, मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया था. तो 2-3 बार जब मैंने खुद इन्वॉल्व हुआ और ज़्यादा कम्युनिटी के साथ, थोड़े बहुत इशू वगैरह मतलब पे काम किया, ब्लॉग्स वगैरह लिखे, है ना, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ. सो उसके अंदर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, बस एक्टिव रहो, इन चीज़ों के बारे में इतना मत सोचो, बट लाइक जो एंड टर्म मोटिवेशन होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कि हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है और हमें सीखना है. बाकी इवेंट्स जो हैं, क्यूबकॉन टाइप इवेंट्स हैं वगैरह वगैरह, उसको तुम अप्लाई कर सकते हो. या आई जस्ट सेंड ऑल द लिंक्स अगेन, जस्ट 1 second. Okay, no worries. No worries. Yeah, but we got a couple other questions up here, Kunal. So why did Kubernetes come into play? It means why containers got so much hype, and also how Kubernetes became biggest open source project. Wow, that's a really good question. Go ahead. From Cart to Game. Appreciate the question. Yeah. So Kubernetes पहले Google का था, तो Google ने open source किया था. In what year did Google open sources? 2014. Yeah. Google's it was originally called Borg. Yeah. And it was an internal system in Google. So you have to remember is that the problem that was solving was basically a problem that Google was having with the orchestration deployment of their applications through containers. Yeah. But then after that is when it was given as an open source project, donated as an open source project to the CNCF. CNCF. Yeah. तो गूगल का था ये. गूगल के बारे में मतलब उनके पास इस तरह के इश्यूज थे कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर तुम्हारे thousands and thousands ऑफ पॉड्स और कंटेनर्स वगैरह चल रहे हैं तो कितने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं. जैसे CBSE की वेबसाइट पे भी आता है, डाउन हो जाती है ना जब रिजल्ट आता है, तो जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो हमें उनको स्केल अप करना पड़ता है. अगर हमें ऑटोमेटिक रोल आउट करने की, एप्लीकेशन बंद करे बिना
हम नया एप्लीकेशन का वर्जन डाल सके, है ना, रोल आउट, या अगर तुम्हें प्रीवियस वर्जन पे जाना है तो रोल बैक करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजें होती है ना. स्टोरेज की अगर हमने बात करें, स्टोरेज मैनेजमेंट, और बेसिकली इन जनरल इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट वर्चुअल मशीन्स वर्सेस कंटेनर्स. ये नहीं होता, दे बोथ गो टुगेदर, मतलब दोनों साथ में चलते हैं. वर्चुअल मशीन्स के ऊपर कंटेनर्स चलते हैं, है ना, पॉड्स के अंदर, क्यूबरनेटिस के अंदर. क्यूबरनेटिस का काम होता है इसको मैनेज करना, ऑटोमेटिक, मतलब इसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह वाली भी चीजें आ जाती हैं, है ना, तुम्हारे मतलब वो चीज इनग्रेस वाली चीजें आ जाती हैं. मतलब अगर तुम बात कर रहे हो तो मैंने youtube.com डाला फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारे लिए वो youtube.com है, दुनिया में हर किसी के लिए वो youtube.com है, बट इंटरनली वो रिक्वेस्ट किस कंट्री में जा रही है वो सबके लिए डिपेंड कर सकता है ना. तो वो नेटवर्क फॉरवर्डिंग वाली रिक्वेस्ट वाले सारे काम क्यूबरनेटिस हमारे लिए कर देता है फॉर एग्जांपल. तो इनको डोनेट हुआ था ये CNCF में, एंड काफ़ी पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ केस है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक हर जगह, मतलब क्यूबरनेटिस के भी ना ऑल्टरनेटिव्स लोगों ने एक तरह से निकाल रखे हैं. You might have heard about things like serverless and stuff, and it's not like totally an alternative, but the more thing I'm talking about is software as a service, for example. So even though some people जो है वो Kubernetes use कर रहे हैं, but उनको ये नहीं पता कि under the hood क्या चल रहा है. There's this level of abstraction being provided. तुम देखो Red Hat के products हैं, like OpenShift करके है ना, Cogito वगैरह है. तो मतलब even though it uses Kubernetes and all these things, but the actual user is focused on just the code part. So there are so many ways, काफी सारे ways हैं जिसके अंदर enterprises and everyone Kubernetes को use कर रहे हैं. And the best way to figure out मतलब कौन सा best work करता है is depend on the use, मतलब use case पे depend करता है लोगों की. तो यही रीजन था कि मतलब काफी पॉपुलर हुआ है, एंड रिसेंटली मतलब कम्युनिटी इज ग्रोन टू बी, मतलब काफी बड़ी हो गई है, एंड हर जगह यूज हो रहा है, एंड काफी ज्यादा यूज केस हैं इस प्रोजेक्ट के. लाइक आई मेंशन, शुरू में लोगों को लगता है सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन टाइप चीजों के लिए, बट नहीं, लाइक सिक्योरिटी टाइप एंड ऑल दीस थिंग्स उसके अंदर भी काम आ जाता है. Yep, these are great points. I mean, and just so people have an idea, when we're talking about numbers, if you go into the Kubernetes Slack, there are over 120,000 people there. All right, like we're talking about serious numbers. And if we're talking about the people that attend KubeCon, obviously being virtual, because you went to KubeCon in California, that's right, Kunal. Yeah. Yep, 2019. So you went to a physical one, and obviously thousands of people there too. Is we're just talking about the amount of people that are participating in this. Kunal, I think it reached over 100,000 pull requests about a month ago as well too. I was just about to mention that. Yeah. Go ahead, do it. 1123 open pull request. Yeah. And 62,000 closed. So we get the idea. We're talking about serious numbers, and we're talking about people in India, in the United States, in Australia, in Japan, in China, in Germany, and absolutely everywhere. So that's also one of the really cool things as well too about the CNCF, is that it really is a global community. You get plugged into. I mean, every week Kunal and myself are talking to people from, I mean, between the two of us, I would say 10, 15, 20 different countries, depending on. And so that's one of the other really nice things as well too, is you get to meet people from other countries. So to learn about them, and they learn about you, and that's a really, really positive thing about it as well. Anyway, we got a bunch of questions. Let's see. I don't know where to start. Okay. All right. So Noah is asking, was that up here? How can we get basics cleared about Kubernetes technology and overall getting started with cloud technology for open source contribution? Once again, I'm not to repeat myself too much, and I'm sorry if I am. And maybe if you want something a little bit more specific, I just put it right there in the chat. But like I said, if you jump into one thing that's helpful is that if you identify your skill set or things that you want to do, so you say like, I don't want to be a code contributor. I want to help out with other areas. I want to focus on documentation. I want to focus on marketing. I want to focus on user experience, things like that. You can totally do that. CNCF does tons of surveys, like the end user profiling. A lot of that's being handled by Katie Gamaji, who's the amazing ecosystem technical advocate that we have that's working in the CNCF. So like I said, I think first of all is like do a little bit of internal research about, I want to focus on JavaScript. I want to focus on Python. Once you do that, then when you go to the CNCF Slack or the Kubernetes Slack and you say, hey, I'm interested in this, then it's easier to find you the right place to go. Translate that. Yeah, and it's a definitely very good question. I know like it can be overwhelming. जब शुरू में काफी overwhelming हो सकता है जब start कर रहे हो. तो Bart ने क्या बोला? Bart mentioned that you can definitely start with like मतलब तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारा interest कहाँ lie करता है.
है ना, बिकॉज क्यूबरनेटिस के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे, मतलब वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह, है ना. सो उसके लिए हमने ऑलरेडी रिसोर्सेज शेयर कर चुका हूँ. तुम्हारा जो क्वेश्चन है मोर स्पेसिफिकली लाइक क्यूबरनेटिस के बेसिक्स, है ना. सो इसके लिए क्यूबरनेटिस की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वेबसाइट, उसके अंदर एक सेशन है ट्यूटोरियल का, वो बहुत अच्छा है. एंड ओवरऑल अगर तुम डेवऑप्स की बात कर रहे हो, है ना, तो एक वेबसाइट है catacoda.com, ओ सॉरी catacoda.com. तो ये वेबसाइट का क्या है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो जाता है इसके अंदर. डॉकर सीखना है, क्यूबरनेटिस सीखना है, थानोस, प्रोमीथियस, गोलैंग, मॉनिटरिंग, ऑल द ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल है. मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे मस्त ट्यूटोरियल है. तो इस तरह से शुरू कर सकते हो. अदर देन दैट एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि ट्यूटोरियल हेल के अंदर मत फंसना. मतलब ऐसा नहीं है कि सीख रहे हो बट अप्लाई नहीं कर रहे हो उसको एनीवेयर. खुद के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो. टेस्टिंग पर्पसेस के लिए मिनी क्यूब यूज़ कर सकते हो एंड क्लाउड प्रोवाइडर्स को देख सकते हो. मिनी क्यूब का क्या होता है, एक ही क्लस्टर होता है तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन रेडी नहीं होता, बट चीज़ें ट्राई आउट करने में काम आ जाता है. I was just sharing about like how they can try out Kubernetes on local system. Oh, for sure. That as well too. And also all the training courses that are from the Linux Foundation, you have a lot of them for free. And particularly, once again, because most of the folks that are here in the audience are younger, there's a lot of additional support for younger people. So you don't have to pay for anything or stuff like that. So don't worry. It's not a question of money. All right. It's not a question of money. It's a question of time, asking questions, getting some mentoring, asking for help. You will have to spend some time learning it, but don't think that it's a question of money, because a lot of the Linux Foundation trainings are free. There can be paid versions where you might get a certification, but particularly in the case of young people, there can be scholarships and other sorts of ways of getting around that so that you won't have to pay. There is. It's called Lift Scholarship. I'll just share the link. It's open right now. Perfect. There you go. Brilliant. So yeah, that's the thing, is like, don't worry about money. It will, like I said, it will take some time. I mean, there are tons of resources out there. I mean, Kunal and Code for Cause is an amazing organization that's doing a lot of work for young people. There are other folks in the CNCF ecosystem, like Dan Pop from the Popcast, shout out to Pop, who has a wonderful podcast where he interviews lots of different people from the cloud native landscape. So like I said, in my case, once again, being a non-technical person, it's because of people like that just have conversations that you listen, that you start to pick up the words, the terminology, the technologies, and it makes it easier. From a strictly beginner perspective in Kubernetes, another CNCF ambassador, Anais, has a wonderful YouTube channel where she has 100 days of Kubernetes. That's also a cool thing to check out. She's great. She's a rock star. So like I said, there's lots of resources out there. There's not one secret way to do it. It's just having regular contact and then getting involved in a community. And like I said, join a SIG, attend meetings, just to be there to listen. As long as you're positive and friendly, you're not going to have any problems. I just realized I was sharing all the links to just panelists, so I shared it again. Well, I got all of them. That's good. Yeah. There's one more channel. Yeah, Anais is doing great work. She has like 100 days of Kubernetes thing going on. It's very, very good. They also recently launched a website or something, which is also a nice collection of resources. There's also Tech with Nana on YouTube. Oh, also very good. Yeah. Good channel. Yeah. This is great. Good questions. Yeah. Also, somebody was asking as well too about DevOps stuff. Obviously, there's definitely stuff in the CNCF ecosystem about that. But more specifically, if folks are interested in DevOps, I would definitely recommend the DevOps Institute. Shout out to Tiffany Jachta and also to Alex Jones, both wonderful people who are there that you can follow on Twitter, and they give lots of talks and there's lots of information out there. But once again, is that I know that you're young and you're really energetic, and that's good. All right. And you want to be proactive and all that kind of stuff, but don't feel like you have to do everything all at once. All right. There's going to be a little bit of trial and error. What you're doing right now compared to what you're doing in 5 to 10 years might be a little bit different, but the main thing is learn stuff, ask questions. Another thing that Kunal is always about as well too, learn by doing, find a way to put it into practice, right? That's super, super important. Not just reading the theory, but actually taking it, creating some kind of a sandbox environment where you can play around with stuff and get real practical experience, which then will make it even easier to ask other folks questions. Yeah. And be active on Twitter. Twitter पे काफी community मस्त है Kubernetes की, and जितने भी लोग मतलब contributors and everyone उसमें resources and news वगैरह share होती है about Kubernetes वगैरह करके. So community के लिए active रहना हो तो मतलब information चाहिए, for example अगर, so follow the Twitter accounts of Kubernetes and Linux Foundation, CNCF. Yeah. Very, very good.
And Data on Kubernetes on Twitter. Of course. Particularly if you like rap videos, art, and other crazy stuff. That's our sort of way of being a little bit different. I don't know. I mean, I think the thing is, I think we could definitely do another one of these sessions and maybe get some of the questions beforehand so we can react to that. But I thought it was going to be like last time, you know, the recorded version and then like the live upload on YouTube. But now that we are getting more people involved, I could have shared it about it like. And I also believe like this is but Kunal, what else would you like to share? Yeah, we've got 15 minutes to go for it. Yeah. I just want to share like in the meetup group, it's not really having the link to the Zoom call. So many people who were like wanted to attend, they were like, they do have the calendar invite for meetup.com, but there is no link to join. So in the meetup group, you can just put it as an online event and add the Zoom link so that others can join for future. Well, and the other thing we need to start doing is putting it directly on YouTube, and then it'll make it a lot easier. that's the other thing. That is something we can do as well. Yeah. Very, very good. Thank you, wonderful people in the chat that are doing all this good stuff. You guys are awesome. Nice. I don't know, Kunal, what else would you like to think about? I mean, like I said, I guess you can kind of explain, that, Kubernetes originally wasn't planned to have stateful workloads and databases operating on it. Once again, is that it was particularly designed for Google to be dealing with that kind of stuff. So that's why the Data on Kubernetes community, we are sort of in a niche position. It's not really the most common stuff to be talking about. So like I said, there are lots of knowledgeable folks in our community that will be happy to help you. But I'm saying there are lots of other resources out there too that can be quite helpful. Just because a lot of this stuff is kind of new. Kunal, maybe you could comment a little bit also on something that's kind of new and different, chaos engineering. Yeah, I personally haven't like gotten chance to, you will dive deep into that one. But there was like a topic we did not discuss upon, which was stateful versus stateless applications, right? Do it. Yeah. So इसका in general like मतलब वैसे में क्या होता है कि सिंपल टर्म्स में अगर बोलूं, है ना, तो अगर मैं एक तरह से पहले बात करता हूं तुम्हारी स्टेटफुल एप्लीकेशंस की, तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो परसिस्टेंट स्टोरेज इसके अंदर रिक्वायर्ड होती है. जैसे मैंने कंटेनर्स वगैरह की बात करी, है ना, तो कंटेनर्स अगर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब कंटेनर तुम्हारा डाई कर जाता है ना, तो अगर उसकी तुम अंदर जो स्टोरेज होगी तुम्हें चाहिए कि वो मेंटेन होके रहे, उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज. एंड जो एप्स परसिस्टेंट स्टोरेज यूज करती हैं उनको हम कहते हैं स्टेटफुल एप्लीकेशंस. तो इसके अंदर काम क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा वर्क रिक्वायर करने की जरूरत पड़ती है. तुम्हारे सारे कंटेनर्स चल रहे हैं और लेट्स से कुछ हार्ड डिस्क से कनेक्टेड है, मान लो लेमन लैंग्वेज के अंदर, है ना, तो एक स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम तुमको बनाना पड़ता है. ठीक है, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं जो अभी मतलब कंटेनर्स में डिप्लॉय हो रही हैं, वो कंटेनराइजेशन के उनके मतलब माइंड में नहीं था. मतलब जब वो कंटेनर्स अभी नए नए आए ना, तो एप्लीकेशंस बहुत पुरानी है, तो जब लिखी थी तो तब उनके माइंड में थोड़ी था कि ये कंटेनर्स पे रन करने की जरूरत पड़ेगी. तो उन एप्लीकेशंस को मतलब स्टेटलेस बनाने के लिए या एक कंप्लीट रीडिज़ाइन मारना पड़ेगा. तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब यहाँ पे इन केसेस के अंदर स्टेटफुलनेस एक ज़्यादा बेटर चॉइस है. तो क्वेश्चन अब ये हो गया है कि लाइक इट्स नॉट लाइक अबाउट कि मतलब उसको यूज करें स्टेटफुल एप्लीकेशंस को या ना करें, है ना, स्टेटफुल कंटेनर्स या ना करें. क्वेश्चन ये हो गया कि कब करना चाहिए. तो सिंपल अगर आंसर इसका मैं बोलूं कि अगर तुम्हारी जो ऐप है उसको अगर मेमोरी मैनेजमेंट या एक सेशन से दूसरे सेशन में क्या हो रहा है ना, स्टेट मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, तब तुम स्टेटफुल एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो. अब इसके अंदर भी मतलब काफ़ी सारे मतलब चीज़ें होती हैं स्टेटफुलनेस के अंदर की. सेशन बेस्ड स्टेटफुल एप्लीकेशन हो जाती हैं, है ना, कंटेनर लेवल के अंदर तुम्हारी एनवायरनमेंट बेस्ड हो जाती हैं. इसके अंदर एग्जांपल हो जाता है तुम्हारा आईपी एड्रेसेस वगैरह का, है ना, डेटाबेसेस एक्सेस का, जो तुम्हारी क्लस्टर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन का, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये होस्ट लेवल पे होती हैं. तीसरी चीज़ होती है वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स क्या होता है, कोई एक्सटर्नल स्टोरेज होगी उसके अंदर स्टोर कर रखा है तुमने, है ना, तो वो कंटेनर्स कुछ हार्ड डिस्क वगैरह से या क्लाउड स्टोरेज भी हो सकता है ना, तो उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, कंटेनर्स उससे बात करेंगे एंड इससे तुम्हें एक तरह से ये होएगा कि इवन दो कि अगर कंटेनर कुछ को खराब हो जाता है तो डेटा स्टोर रहेगा हमारा. ठीक है, क्यूबरनेटिस कैसे करता है इसको, तुम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो. परसिस्टेंट वॉल्यूम प्लगइन्स होते हैं, स्टोरेज क्लासेस होती हैं, स्टेटफुल सेट्स होते हैं. तो एक एपीआई का वर्कलोड, एपीआई ऑब्जेक्ट होता है ये स्टेटफुल सेट. तो बेसिकली जो मैंने बोला ना पॉड होते हैं, तो उनके अंदर जो कंटेनर्स रन कर रहे होते हैं, इसकी यूनिकनेस डिफाइन करता है.
अगर मैं स्टेटलेसनेस की बात करूं, उसके अंदर मैं यूनिकनेस की बात करूंगा बाद में। एक और चीज़ होती है कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस। तो ये भी एक फाइल स्टोरेज सिस्टम टाइप की तरह होता है फॉर कंटेनराइज्ड वर्कलोड्स। ये तो हो गया मतलब क्यूबरनेटिस कैसे यूज करता है इसको, है ना। एक चीज़ होती है कि एक्चुअल में इसकी अगर हम एफिशिएंसी या कंसिस्टेंसी की बात करें, है ना, तो एक आइडिया लो कि अगर मान लो एक डेटाबेस है एक डेटाबेस है मान लो, ठीक है, दो पॉड चल रहे हैं मान लो, पॉड ए और पॉड बी। पॉड ए से उस डेटाबेस में किसी ने चेंज किया, अब पॉड बी से अगर कोई उस डेटाबेस को क्योरी कर रहा है, मतलब उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो पॉड ए ने जो चीज अपडेट करी थी वो अपडेशन बी को दिख जाए, है ना, या तो एरर या तो एरर आ जाए। तो 1 सेकेंड, I ran out of water. This is why you should have. Hey, this is practical advice. If you're ever going to be giving a talk, make sure you have water nearby. It sounds crazy, but it actually it can become a major factor. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो हम बात कर रहे थे, जैसे दो पॉड है, एक पॉड ने डेटाबेस में चेंज किया, दूसरे पॉड से उसको क्वेरी मार रहा हूँ, तो क्या होगा, या तो अपडेट दिख जाएगा या एरर आ जाएगा। इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आ जाती है अवेलेबिलिटी की, है ना, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं अवेलेबिलिटी उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे एप्लीकेशंस के फंक्शन है ना, वो परफेक्टली काम, मतलब जितना परफेक्ट पॉसिबल है उतना परफेक्ट काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एकदम परफेक्ट तो मैं बोल लूंगा नहीं, तो कम से कम एरर होना चाहिए बेसिकली। तो एक तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो, है ना, और उसके अंदर लोग फिर चेंज कर पाए। बट अगर एक ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, अब एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा कि यार अगर यही खराब हो जाए तो फिर गड़बड़ हो गई ना। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है उसकी हाई अवेलेबिलिटी, मतलब जो होता है ना तुम्हारा कि हाई अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, मतलब लाइक एक अगर तुम्हारा एक ही पर्टिकुलर सोर्स है वही डाउन हो गया तो गया सारा काम, है ना, कोई बैकअप नहीं है एक तरह से मान लो, या कुछ और बैकअप सर्विस तुम्हारे पास नहीं है। तो इसके लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड वे यूज कर सकते हो टू स्टोर परसिस्टेंट डेटा इन क्लस्टर्स, एंड इसको हम कहते हैं ऑल्सो नेटवर्क पार्टीशनिंग कहते हैं इसको। तो क्लस्टर्स का बेसिकली हमारे अंदर ये होता है कि जो फेलियर होगा ना नोड का, उसको सर्वाइव करना पाए अगर वो, तो स्टेटफुल एप्लीकेशन हम उसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। अब स्टेटलेसनेस की बात कर लेते हैं थोड़ी। ये सिंपल है, इसमें इतना कुछ है नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि डेटा स्टोर नहीं होता का, है ना, क्लस्टर के अंदर या उसके अंदर परसिस्टेंट स्टोरेज के अंदर। तो अगर तुम्हारा कंटेनर गया तो गया। एडवांटेज क्या है, सिंपल है। और अगर मैं ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये काफ़ी मस्त चीज़ है, बिकॉज डिफरेंट पॉड्स, मतलब जो तुम्हारा पूरा क्यूबरनेटिस क्लस्टर होगा उसमें काफ़ी सारे पॉड्स होंगे, है ना, उस हर पॉड के अंदर एक कंटेनर होगा, एक होगा या एक ही होता है वैसे तो कन्वेंशन यही है। बट आइडिया ये है कि अब तुम इन सारे पॉड्स जिनकी चीज़ में बात कर रहा हूँ ना, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं ये, है ना। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट इनके अंदर आ सकती हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, पॉड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो क्यूबरनेटिस के अंदर एक चीज होती है डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि नॉन यूनिक पॉड्स होते हैं, पॉड अगर कम पड़ जाएंगे वो दोबारा स्टार्ट कर देगा, और कम पड़ गए दोबारा स्टार्ट कर देगा, ज्यादा हो गए कम कर देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के बिना तो समझ में आता ही नहीं है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है, मान लो स्टेटलेस है, काफी सारी रेप्लिका तुमने डिप्लॉय कर दी टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड स्केल डाउन कर सकते हो जब डिमांड तुम्हारी कम हो जाए। बट जो रेप्लिका है उनकी कोई सच यूनिक आइडेंटिटी की नीड नहीं है इसके अंदर, फ्रंट एंड पार्ट के अंदर, है ना। तो या ये कर सकते हो स्टेटलेस के अंदर। एंड जो डेटा होती है और जो एप्लीकेशन की स्टेट होती है वो क्लाइंट के पास हम सेव करके रख सकते हैं ताकि इसको हम ज़्यादा स्केलेबल बना पाए, है ना। और या इसके अंदर भी मतलब एक धोखा टाइप चीज़ हो जाती है कि कभी कभी ये कुकीज़ वगैरह करके चीज़ें अगर स्टोर करके रखे, तो इवन तो चलो यहाँ डेटा स्टोर हो रहा है, तुम बोल रहे हो स्टेटलेस है, तो ये थोड़ा चीटिंग हो गई, है ना, ऐसे मान सकते हो। बट द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कौन सा हमें कब यूज़ करना चाहिए, है ना। सो दैट इज द क्वेश्चन, इट्स नॉट दिस और दैट क्वेश्चन, बट क्वेश्चन ये है कि कब यूज़ करें, है ना। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक द यूज केस। अगर तुम्हें मतलब स्टेट मैनेज करनी है ना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन के लिए, है ना, तो उसके लिए मतलब तुम स्टेटफुल एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ क्विक और टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो तुम्हें ज़्यादा डिपेंड नहीं करता एक उसके एक पर्टिकुलर
कंटेनर का मतलब पॉड जो है दूसरे पॉड्स वगैरह से या सर्विसेज इतने मतलब एक दूसरे से, जैसे मैंने फ्रंट एंड का एग्जांपल दिया था, तो उसके अंदर तुम फिर स्टेटलेस ऐप यूज कर सकते हो। कुल स्टेटलेस का एक और एग्जांपल, एक और काफ़ी अच्छा यूज केस होता है कि रीस्टार्ट करना आसान हो जाता है ना, क्योंकि उसको रीस्टार्ट कहीं भी कर सकते हो ना, इवन डिफरेंट क्लाउड सर्वर पे कर सकते हो एज लॉन्ग एज तुम्हारे पास उसके आर्टिफैक्ट्स अवेलेबल है। बट स्टेटफुल एप्लीकेशन स्टेटलेस का था, स्टेटफुल एप्लीकेशंस के अंदर फिर वो हो जाता है कि जो डेटा वॉल्यूम है वगैरह वो तुम्हें अगर तुम डिफरेंट क्लस्टर पे पॉड्स चला रहे हो तो तुम्हें वो डिफरेंट क्लस्टर्स पे फिर करने पड़ेंगे, अब मतलब वो डेटा भी तुम्हें भेजना पड़ेगा। अब केओस इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, है ना, तो वो होता है मतलब प्रोडक्शन के अंदर टेस्ट करना होता है। तो मेरे को इतना अभी उसके ऊपर एक्सपीरियंस मिला नहीं है, बट really looking forward to it. Yep. Yeah, no worries. We can definitely talk about chaos engineering another day. This was fantastic. Yep. This was amazing. And we definitely have to do this again. We don't have a lot of time left, but I just want to tell everybody, keep following Kunal. There are going to be more. No, I say it in the sense of like, if you want to get more advice about how to start contributing, you can do it. Believe me, there are so many different ways that you can do it. If I can do it, you can do it. All right. So don't worry about it. And the main thing is, don't feel like you have to try 30 things at the same time. Start a little by little, right? Yeah. And also as well to make good connections, be nice, be friendly, be supportive, help other people get their questions answered. Also as well too is that people like to be asked questions, right? People like, people that have a high level want people to ask them questions because they get to show their knowledge, right? A big thing that we say in the CNCF is, to pay it forward. Don't do nice things without expecting something back in return. The main thing is just the more that you give, the more that you'll probably end up getting back. So that's a really, really important thing to keep in mind. And I say like that, I say also follow Kunal to find out about all the events that you can get access to as students. As you said, there's going to be a really special update next week or in the next few weeks about special things that are going to be going on. Yeah, after KubeCon. So seriously, you're being taken into consideration. We value your opinion, your insights, your doubts. We want to be as helpful as possible, but just know this, there are lots of opportunities. There are tons of opportunities in open source projects. So don't ever feel like something is going to be too difficult for you. All right. Do that little diagnosis of where am I at in terms of my technical interests or non-technical interests. And then based on that, it'll be easier to help you find a place to go and what people you should be working with. Other things as well, too, as Kunal mentioned, like scholarships, there's mentorships, there's tons of different things out there. Go to the CNCF website, go to the Linux Foundation website, you'll find lots of things. In our community, in the Data on Kubernetes community, we're very, very much looking forward to working more with young people. So you'll be seeing more of these kinds of question answer encounters that Kunal and I will be leading. Anything else that I've forgotten to mention so far, Kunal? No, I believe you covered everything. Yeah, just important thing is get started, get involved, explore, and ask questions. Attend meetups like this. Attend KubeCon. If anyone wants KubeCon ticket, you can mail me at Kunal. I'll send my email. Again, yeah, 1 second. Yeah, I just put my Twitter handles as well too. For the Data on Kubernetes community is one, and then for my personal one is also in there too. So yeah, so I'm pretty easy to find. You can also find me on LinkedIn. Well, Kunal and I are both very easy to find. Kunal, I think you now have 30,000 followers on LinkedIn. So if somebody wants to add you, somebody else needs to leave. I don't use LinkedIn because it's like very cluttered. 30,000 followers and my notifications are difficult to manage and everything. It's just you can reach out to me on Twitter. I'm happy to help on Twitter. Yeah. That's cool. And also, Kunal, you're probably in about 15 different Slack channels that people can also find you, including, like I said, one of the best ways to jump in is that if you just get into the CNCF Slack and you start asking for questions, look at the list of SIGs, all right? Look at the list of special interest groups that Kunal also posted. It's a really good way to get introduced to all this, all right? So you can just kind of focus on one area without having to worry about all the other things going on in the ecosystem. But remember, there are YouTube videos, there are podcasts, there are articles, there are blogs, there are community meetups, there are tons of different things out there. You just got to find the one that works for you and where you're going to feel most comfortable. There's a hashtag in-depth channel on the Kubernetes Slack. There people post good beginner-friendly issues. It's free. The KubeCon co-located event. Yeah, our co-located event is 100% free. All you got to do is go to our YouTube channel on Monday, and everything will be live streamed there. All right, so that'll be starting at 10 a.m. European time, which IST is 1:30, 10 a.m.
I always get It's set confused. for- What time is it there right now? 8 o'clock. Yeah. No, I'm asking over you. here, yeah, it's 8 o'clock. Yeah, Okay, exactly it's 8 o'clock. It's 8 o'clock. So yeah, so like I said, so that means that on Monday it'll be 1:30 p.m. IST, but also as well too, all the talks that we're gonna be having next week on Monday, including Kunal's talk, which will be talking about how to scale communities, which I'm really looking forward to because it's a nice breath of fresh air, particularly to think about. All right, we talk about getting young people involved. How are we actually going to do that? All right, so that's exactly what Kunal's going to be focusing on. All those talks will be recorded and they'll also be uploaded to YouTube. Most of them are quite short, 10, 15, 25 minute, 30 minute maximum in terms of the talks we're having, trying to get as many different folks in there as possible to share their experiences and opinions. So all that will be there. In general, we have lots of, like I said, this is meetup number 5 that I've been doing this week, which I'm kind of tired. But anyway, we're doing lots and lots of stuff, and I really look forward to interacting with and engaging more with young people. That being said, we will continue the conversation in Slack, in Twitter, and LinkedIn, all those other places. Kunal, any final words that you would like to share in Hindi? या जस्ट शुरू करो एंड इन्वॉल्व हो जाओ मतलब कम्युनिटी के अंदर एंड तुम्हें बस लगता है ओवरवेलमिंग है बट इन रियलिटी लाइक काफ़ी बिगिनर लोग भी मतलब अप्लाई करते हैं एंड सिलेक्ट होते हैं लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं सो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोग वहाँ पे हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए एंड गाइड करने के लिए इश्यूज भी तुमको दे देंगे वो कि यार ये इशू है देखो इसमें काम कर लो इन डेफ चैनल भेजा मैंने अभी उसके अंदर जाके ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे डिम्स एंड Nikita and everyone else, they regularly share कर रहे होते हैं वो issues वगैरह के बारे में कौन से issues तुम contribute कर सकते हो वगैरह वगैरह. So yeah, कोई और question हो you can reach out to me, you can reach out to Data on Kubernetes and KubeCon पे मिलते हैं. Yep, sounds good. I think that's pretty much it. So how do I say goodbye in Hindi? I just say goodbye. So let me think. You say goodbye. No, come on. Somebody in the chat, tell me how to say goodbye in Hindi. Alvida, yeah, alvida. Alvida. Let's just do this thing once. Yeah. Alvida. Yep. This is great. Nice. This is amazing. Perfect. Okay. All right. So I'll see you in Twitter in a bit. We'll upload the video, like I said, if not today, tomorrow. So for the folks that arrived late, we can share that so everybody can be able to see that. Anyway, thank you all. Have a wonderful weekend. Much love to everybody. All right. Thanks. Bye.